Hello everyone, welcome back to Medical 360. So students, suppose हरियाणा राउंड 1 में आपको MBBS सीट मिल गई बट कॉलेज आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है. अब क्या करोगे? सीट ज्वाइन करके अपग्रेड ट्राई कर सकते हो. अगर राउंड 2 में बेटर सीट नहीं मिली तो ओल्ड सीट सेफ रहेगी. और अगर राउंड 3 में सीट मिल गई बट आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्ट्रेट राउंड का चांस बचेगा. यही क्वेश्चंस हरियाणा काउंसलिंग को ट्रिकी बनाते हैं. नीट रैंक इंपॉर्टेंट है बट काउंसलिंग में व्हाट यू डू आफ्टर अलॉटमेंट कैन बी इक्वली इंपॉर्टेंट. So in this video we are going to understand Haryana MBBS and BDS counseling round by round. Round 1, round 2, round 3 and subsequent mop-up और stray rounds. फ्रेश रजिस्ट्रेशंस कब होता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग कब कंपलसरी है, सिक्योरिटी मनी कितनी हो सकती है, प्रीवियस सीट कब रिटेन होती है और किस स्टेज पर रॉन्ग डिसीजन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन क्लोज कर सकते हैं. एवरीथिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज. हरियाणा काउंसलिंग को 4 इंडिपेंडेंट लॉटरीज की तरह मत देखिए. थिंक ऑफ इट एज अ चेन रिएक्शन. राउंड 1 में जो एक्शन आप लेते हैं वो राउंड 2 की एलिजिबिलिटी अफेक्ट करता है. राउंड 2 का डिसीजन राउंड 3 को अफेक्ट करता है. यस, एंड राउंड 3 का डिसीजन स्ट्रे राउंड को अफेक्ट कर सकता है. सो बिफोर फिलिंग एनी प्रेफरेंसेस आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस. अगर ये कॉलेज अलॉटेड हुआ, क्या मैं ज्वाइन करूंगा? अगर ज्वाइन करूंगा, क्या बेटर ऑप्शन के लिए अपग्रेड भी ट्राई करना है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इस कॉलेज की फी मेरी फैमिली के बजट में एक्चुअली पॉसिबल है? करियर 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर से पॉसिबल कॉलेज ऑप्शन का इनिशियल आइडिया ले सकते हैं एंड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए 8130376334 पर नीट सेंड कर सकते हैं. बट अलॉटमेंट के बाद क्या एक्शन लेना है? दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल हरियाणा राउंड रूल्स. So students, let's move ahead. But before that, let me thank SRM University for sponsoring this particular video. Haryana State Counseling का broad sequence है. Round 1 to round 2 to round 3 and then subsequent round और rounds. Round 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं, first allotment है based on NEET merit and your preferences. Round 2 में round 1 के बाद vacant हुई seats fill होती हैं. Round 3 में रिमेनिंग सीट्स और कैटेगरी कन्वर्जन वैकेंसीज प्रोसेस होती हैं. आई रिपीट, कैटेगरी कन्वर्जन वैकेंसीज. एंड आफ्टर राउंड 3, डिपेंडिंग अपॉन सीट्स रिमेनिंग, स्ट्रे, मॉप-अप और एडिशनल नोटिफाइड राउंड्स कैन बी कंडक्टेड. द हरियाणा गेजेटेड framework specifically says that if seats remain vacant after the first 2 rounds, they proceed to the 3rd round and then further rounds according to central or state direction. Very important. Round 2 के लिए an already registered round 1 candidate normally does not create a completely new registration. They opt in by giving willingness and fulfilling the applicable participation requirement. But fresh choices are required if you want to upgrade. Now, what changes from one round to the another? Let's simplify the comparison. Round 1, fresh registration and first choice filling. Bilkul sahi. Round 2, if I talk about, existing registered candidates continue through willingness, but if they want upgradation, fresh choices must be submitted over here. Now the security amount. For the government aided state quota seats only, the Haryana framework, it basically gives rupees 10,000. Yes, for the general category and rupees 5,000 for SC backward classes, PWD and EWS candidates. So if the candidate also wants to compete for applicable private state quota or management seats, the amount becomes rupees 1 lakh. So this is not simply an extra tuition fee. It operates as a participation या फिर security amount under the counseling framework. If no seat is allotted, अगर कोई seat allot नहीं हुई है, it is refundable according to the stated rules.
So if the candidate joins, it gets adjusted towards the first year fee. Now for round 3, if I talk about, fresh registration can reopen for new entrants, while already registered candidates generally continue without re-registering but still need to satisfy willingness, fresh choice and security conditions as notified. Haryana's official 2025 round 3 schedule followed exactly this particular pattern. So, अब हम बात करते हैं राउंड 1 के डिटेल्ड रूल्स के बारे में. Round 1 begins with the registered candidates filling and locking their choices. For state quota, selection uses the Haryana State Merit List. For management category seats, merit is based on the All India NEET merit as applicable. Now, an extremely important point. Online provisional allotment does not automatically mean confirmed admission. The Haryana Gazetted says provisional allocation itself gives no legal right to the seat. Seat confirmation happens only after the completion of the required steps, especially the fee payment and physical document verification within the notified period. So if the portal says, kya, provisionally allotted, don't celebrate and stop checking the portal. Documents verify करने हैं, fee deposit करनी है, admission letter and joining requirements complete करने हैं, and choice filling also needs caution. Why? Because once the choices are locked for that round, they are treated as final. अब बात करते हैं राउंड 2 के डिटेल्स रूल के बारे में. नाउ सपोज राउंड 1 सीट आपने ज्वाइन कर ली, बट बेटर ऑप्शन आपको चाहिए. राउंड 2 आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है? वो देता है टू अपग्रेड. सीट्स अवेलेबल इन राउंड 2 यूजुअली क्या इंक्लूड करती हैं? अनअलॉटेड राउंड 1 सीट्स, सीट्स वेयर स्टूडेंट्स डिड नॉट ज्वाइन, एंड सीट्स कैंसल्ड और वेकेटेड आफ्टर राउंड 1. सुनिए दोबारा से. ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड टू गिव विलिंगनेस. ये विलिंगनेस आपको देनी ही पड़ेगी फॉर राउंड 2. एंड इफ यू वांट एन अपग्रेड, फ्रेश प्रेफरेंसेस फिल करनी ही होंगी. ध्यान रखिएगा. नाउ वन ऑफ हरियाणा काउंसलिंग्स मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली पॉइंट, your round 1 joined seat remains protected unless a better opted seat is actually allotted in round 2. The Haryana Gazetted explicitly states this retention mechanism. For example, round 1 में आपको कॉलेज C मिला, राउंड 2 में प्रेफरेंस लिस्ट में A, B, C के ऊपर बेटर चॉइसेस फिल की. इफ A और B नहीं मिला, राउंड 1 वाला C रिटेन हो सकता है. If B gets allotted as an upgrade, then your seat shifts to B from C. So upgrade means you do not casually abandon your current joint seat first. ध्यान रखिएगा. Now, what if you don't join the round 2 seat? Important financial consequence. If round 2 में seat allot हो गई and candidate does not join, the applicable deposited amount can be forfeited. The Haryana Gazetted framework states that such a candidate could still participate in the third or mop-up round subject to that round's rule. This is why the preference list should never include colleges you know you will definitely refuse. Counseling is not like that कि college डाल देते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं. Because once it gets allotted, financial और eligibility consequences may follow. अब बात करते हैं राउंड 3 एंड कैटेगरी कन्वर्जन की. राउंड 3 में सीट पूल और इंटरेस्टिंग हो जाता है. क्यों? बिकॉज कैटेगरी कन्वर्जन कैन हैपन. सपोज अ रिजर्व्ड कैटेगरी सीट रिमेन्स वेकेंट because the merit list of eligible candidate in that category is exhausted. The Haryana framework does not immediately throw every such seat into general. There is an established conversion sequence. The example given in the government gazetted is BCA to BCB. Just have a look. BCA seat merit exhausted to BCB category. And finally to unreserved category according to state reservation policy and prescribed conversion system. And importantly,
This conversion is applied in round 3 itself for both government and private institutes under the framework. Now, if a seat falls vacant after round 3, it is first offered back according to the original category mechanism described in the notification before further conversions in the subsequent process. So students checking a vacancy matrix should not simply assume that reserved seat vacant है, अब general seat बन जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. There is a specific conversion order. Round 3 includes seats left after round 2 and seats available through the conversion mechanism. Eligible candidates may include previous round 1 or 2 candidates without a seat, previous non-joiners as allowed, candidates looking for permitted upgradation, and fresh registrations if the official round notice opens the registration. Haryana's actual 2025 round 3 notice is useful here. It allowed fresh registrations from new candidates, while candidates already registered in round 1 and round 2 did not have to register again. But everyone wanting round 3 participation had to follow the willingness, fresh choices, just have a look over here, everything is written, and applicable security requirements. Now here's the biggest warning. In that official Haryana round 3 notice, if a candidate was allotted a seat according to preference but did not join, the security amount was forfeited and the candidate became ineligible for the further stray round. So round 3 preference list should contain only colleges you are genuinely prepared to join. Now students, if vacancies still exist after round 3, okay? Haryana may conduct one or more further rounds depending on central and state directions. And this is important because 2025 actually had multiple late stage rounds listed by Haryana, including stray, additional BDS rounds and special stray. UHSRUG counseling के according. The exact registration rule may also change by round. For example, ध्यान से सुनना, Haryana's official 2025 stray round allowed fresh registration for eligible candidates, while already registered round 1 to round 3 candidates did not need to register again. So students, stray round registration and eligibility must be checked from the specific 2026 notification. एक और बहुत इंपॉर्टेंट हरियाणा का रूल है, प्राइवेट मेडिकल, आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस कैन नॉट कंडक्ट अ सेपरेट सेल्फ क्रिएटेड MBBS या BDS एडमिशन प्रोसेस outside the authorized centralized counseling. The Haryana official admission portal states that admission made independently by private institutes, including those under private universities, outside the notified centralized process are not valid. So, अगर आपको कोई ये कहता है ना, काउंसलिंग छोड़ो, कॉलेज डायरेक्ट सीट दे देगा, for a seat governed by this Haryana framework, don't rely on that. Check the official UHSR/DMER process. Now, talking about NRI candidates. In applicable UHSR affiliated private colleges, 15% of the management category is earmarked for NRI candidates, not 15% of the total college seats. NRI admission still happens on NEET merit. The preference order starts with the actual NRI, OCI, PIO candidates originally from Haryana, then their children, followed by the candidates from other states, their children, and other defined nearest relations. Foreign nationals are considered after the notified NRI, OCI, PIO hierarchy is exhausted. अब अगर NRI seats vacant रहती है, even after the eligible NRI or foreign national list is exhausted, they convert according to the notified rule to open category in government या फिर government aided institutions या फिर to management category in private colleges. Payment is also regulated. NRI tuition has to come through the candidates, parents or sponsors, NRE, NRI, NRO or foreign bank account. And a bank guarantee or surety bond is required where fee is being paid in installments. So NRI quota does not mean shortcut to admission. It is still eligibility plus NEET merit
plus documentation plus the counseling, and everything is written over here what I've actually talked about. So Haryana NEET 2026 एस्पिरेंट्स, काउंसलिंग को रिमेंबर करने का इजीएस्ट फॉर्मूला क्या है? राउंड 1, गेट योर फर्स्ट सीट. राउंड 2, अपग्रेड केयरफुली. राउंड 3, fill only serious choices. Stray or subsequent rounds, follow that specific notification. क्यों? Because rules can change depending on vacancies. And remember the 4 golden rules. Fresh choices may be required even if registration carries forward. Security deposit can be adjusted, refunded, or forfeited depending on the outcome. A provisional allotment is not confirmed admission until verification and fee formalities are complete. And late rounds are not the place for experimental choice filling. Now, Careers 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल है. फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के लिए इस पर्टिकुलर वेरीफाइड नंबर पर नीट आप सेंड कर सकते हैं. एंड बिफोर एवरी राउंड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा अपने आप से. इफ दिस एग्जैक्ट सीट गेट्स अलॉटेड, एम आई रेडी टू पे, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वाइन? अगर आंसर नो है, प्रेफरेंस भरने से पहले रीथिंक करिएगा.